397 मतलब किस बात का हुआ बना रखा था मैं ट्रेंट बोल्ट. I'm sorry, but I'm just speechless right now. I don't have any words for what we've witnessed outside. I think especially Virat Kohli. Virat Kohli. I just can't wait to talk about Virat Kohli. It's just been amazing to see him play like that today. It was something else. Muskan is lost for words. अभी मेरे को लग रहा है. I don't have anything to say other than Virat Kohli century. Nothing else to say. Because जिन लोगों ने आज मैच मिस किया, ये फर्स्ट इनिंग्स मिस करी, वो जेन्युइनली रिग्रेट करेंगे कि हमने ये इनिंग्स मिस क्यों करी है. हम बात करेंगे, हमारे साथ संदीप बिन सर और विमल सर भी जुड़ेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहे तब तक हम बात करते हैं. शुरुआत करी जाए ऑब्वियसली द रेड हॉट टॉपिक 50 ODI centuries for Virat Kohli and he in front of Sachin Tendulkar, his own मतलब क्या कहते हैं den, in his own den, in his own den. पर इससे बेटर स्टोरी लिख सकते थे भगवान खुद वहां बैठे हैं. अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है भगवान जी ने. स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी, क्योंकि भगवान खुद मौजूद थे वानखेड़े में, उन्होंने आशीर्वाद दिया. मेरे को लग रहा है कि जाओ आज जाके मेरा रिकॉर्ड तोड़ो. Because if we see when Virat was on 93-94, we see him cramping up. He had a very bad fall Yes. when he was running across the crease, and then he just got up, and he's next thing you know it's 100 for Virat Kohli, and then it's 117 for Virat Kohli. आपने उनका सेलिब्रेशन देखा था, even because वो क्रैम्प कर रहे थे, he almost 100 के बाद he forgot that he was cramping. Yes. कि उन्होंने जंप किया. हाँ. And then he later on realized कि अच्छा मैं क्रैम्प कर रहा हूँ. I think I need to calm myself down. I loved his reaction. He bowed down in front of Sachin Tendulkar. Anushka gave him flying kisses. Emotions floating all around. I think everyone in that stadium was hoping for one thing, regardless of the fact that they were New Zealand ka fan, or Rohit Sharma ka fan, or anyone else's fan. There was one thing common in everyone's mind. Hello guys. Hello sir. Hello sir. Hello. कैसे हैं आप? Just how we discussed. बस sir. कि hopefully mid innings में और ज़्यादा broader smiles मिले. So we're on plan on that. Sir, absolutely. Truly, I was there, kind of a moment. I mean, these are the few moments as a journalist हो, as a fan हो, आप cherish करते हैं कि ऐसे moment पे आप ground पे रहे. So as a cricket journalist and as a fan of the game, I am feeling very obliged today कि आज जो इस historic मौके पे I was there at the ground. I have seen him, take those 2 runs and create history. Talking about Virat Kohli sir, वो एक बहुत ही I feel वो ऐसा मोमेंट था जो आना ही था इस वर्ल्ड कप में. एंड ऐसी मैं मुस्कान अभी बात कर रही थी, God couldn't have written a better story. Better script, absolutely. In front of Sachin Tendulkar at his own den. In front of him, he scored that century. Bow down in front of him. Because एक दो मैच थे जहाँ पे वो चूक गए थे, to get a century. Even last match. हाँ, exactly. So it was यही मैच का इंतजार था, आज का ही इंतजार था for Kohli to smash a century. क्या emotions थे sir? Because this was truly the God's own destiny, and I can remember one famous dialogue of जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सब कुछ लिखा हुआ है. हाँ. On a serious note, yes. I mean, the script could. Of course, it was like. ये moment जो है ना, मैं बयां करने में I am finding very hard to get those words. What exactly the adjectives we should use for this innings or for this overall achievement? But yeah, in front of Sachin Tendulkar at his own den in a World Cup semi-final in a high-pressure game, he has done it. It couldn't have been anything in here. He has not had a great record in knockout games like World Cup के. Yeah, कभी of एक course. रन पे, 9-1-1. He's also broken that jinx of performing really well. Of course. लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मैं भी 33,000 का कैपेसिटी है वानखेड़े में, लेकिन मेरे ख्याल से जो पूरे मेरीन ड्राइव में आज 5 से 10,000 लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं. They came here, उनको टिकट्स नहीं मिले, और आप देख सकते हैं कि ये लोग भी यहाँ पर मोबाइल में अपने मैच देख रहे हैं, और हर एक रन, हर एक माइलस्टोन को they are cheering from here. So thanks to these fans, hats off to these fans as well. इतने गर्मी में ये लोग पूरा मैच जो है बाहर बैठ के यहाँ से उन्होंने भी जो है एंजॉय किया. तो वानखेड़े के भीतर भी चीयर चल रहा है और टीम के लिए, वानखेड़े के बाहर भी जो है
कम से कम 10,000 फैंस तो मेरे ख्याल से पूरे मेरीन ड्राइव में अभी है. एंड हम 9-1-1 की बात करी, वो जो विराट का स्कोर था 2011, 15, 19 में. That monkey is off his back now. Now he has Yeah. that elusive knockout 100, and I think it's one of the great innings of Virat Kohli क्योंकि उन्होंने 18 innings How खेली है. at this आपने वो point I शॉट देखा, feel आपने वो शॉट देखा जो उन्होंने स्टेप आउट करके फास्ट बॉलर को with his चिंतावनी का wrist hit छक्का. for a six. Yes, That was yes, probably one of the best shots. जो ऑफ absolutely. कोर्स द हैरिस राउफ वाला शॉट तो बहुत ही वो probably his best shot of his career. But ये शॉट भी एक, अगर 1 से 10 या 1 से 5 में आप गिनेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो शॉट भी जाएगा उस पायदान में. That was a very very difficult shot to execute against a fast Exactly. bowler stepping out with his wrist, timing the shot. Yes. I mean, oh, I think we have Vimal sir also with us. Hello sir. Do you have Hi, anything to say like at the moment for what we've witnessed outside? I will be a short of words at the Yes, moment. I'll indeed. be It's honest. so surreal, you know. One doesn't just believe that one has just watched. मतलब we are just watching the history making. मतलब आपको लगेगा कि किसी ने कहा कि स्क्रिप्ट अगर लिखी हुई ड्रीम स्क्रिप्ट होती है, और ड्रीम स्क्रिप्ट नॉट ओनली फॉर विराट कोहली बट आल्सो फॉर द होम बॉय श्रेयस अय्यर. वी ऑल नो द स्क्रिप्ट ऑफ Yes. विराट कोहली, but I think credit must be given to Shreyas Iyer. The way he batted, the way he, played a kind of innings, mature innings, aggressive innings उन्होंने खेला है. And the reason, obviously, Virat Kohli, we all know that 50वां 100 सचिन तेंदुलकर के घर में आके उनको ट्रिब्यूट देना, मतलब एक बच्चे के लिए आप, if you look at the script, when anyone from his generation has idolized Sachin Tendulkar, and Virat has been, I remember my first interview with him at 2006. This is the first thing I had asked him. So he said that my name is Virat Kohli and I idolize Sachin Tendulkar. And since then, he has come a long way, of course. But yes, I think someone else is writing his script. We used to say about the Australian players, Glenn McGrath, Shane Warne, the kind of dream farewell they used to have in World Cup or in their last series. This is probably, maybe we don't know. But if this is his last ODI World Cup, then he is at least trying to make it very, very special. The kind of determination you see on his face today, first time you saw that he was struggling a little bit on fitness front, humidity, cramp, and all that. So forget about the kind of runs he has made, the kind of commitment being there. And if it starts from the selfless innings of Rohit Sharma. The way Rohit Sharma was batting, he could have waited for his 50 and then accelerated. But the fact that captain says, no, I will lead from the front, I will just give a rollicking start, and he does that. And then it trickle down effect from the top to bottom. The fact that India, it's just unbelievable, at one point, at the beginning of the tournament, India were thinking of a batting insurance in the form of Shardul Thakur at number 8 or even R. Ashwin. And now they don't need even Ravindra Jadeja. So that speaks volumes about India's batting lineup. Sir, we were just discussing, before we started this live, and we were just setting things up here, and we were just talking what makes a player like Virat Kohli. Because in all honesty, you don't see every other player being like that. You don't see them just being on the field and playing for the country. You're actually playing you're just playing out there to see your team win. And I think today how Virat played is just an example of how amazing he is as a batter. And we were just discussing what goes on in the mind. How do you make yourself so strong mentally? How do you tune off all the conversations that are going outside, and let everything be aside and still perform like he has today? I think it's amazing. See, Virat Kohli, obviously, when you see Virat Kohli in this World Cup, he just looks like a different Virat Kohli. I think it's a culmination of many things. The past 3 years had not been great for him. The way he lost captaincy and all those stories, we know the kind of negativity he had to face. And then coming into his own groove, the way he made a comeback. And I think the most special thing, which is my observation following this Indian team very closely, that
he was made wanted in this Indian team. Obviously, he had that respect of the dressing room. The fact that the likes of Rahul Dravid, the likes of Rohit Sharma, they made him, you know, realize that he is very, very special to this Indian team. That his experience, his stature. So even if he is not the captain of Indian cricket, he is still the most formidable batsman of this team. This team, the captain, the coach, they don't have any hesitation. They don't have the ego. The fact that Rohit Sharma doesn't let his ego comes, you know, like his acceptance, he is the biggest batsman on the planet. Like the same was the case when Sachin Tendulkar was in the team of, say, Rahul Dravid or Saurav Ganguly. They had no qualm. They were not competing their batting greatness with Virat Kohli. The fact that you need that kind of respect and this dressing room, you know, see, things change, things evolve. And I think whatever may be the issues or we don't know sometimes the whole stories. But the fact at this point of time, I think the kind of respect, you know, Virat gets from his teammates, from the top management, and the way he is repaying, you know, that trust, it's fascinating to see that. Absolutely. And विराट की बात करी हमने, but we should also make sure कि हम बात करें श्रेयस अय्यर की 67 बॉल सेंचुरी. एंड कुछ 3-4 मैचेस पहले ही बात हो रही थी कि मे बी, यू नो, इज ही द राइट गाय, इज ही इन फॉर्म. लोग कह रहे थे आउटसाइड नॉइज की सूर्या को लाना चाहिए एट नंबर 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट लास्ट 5 मैचेस consecutive half centuries, 2 centuries, back to back centuries. And I think credit should go to Shreyas Iyer, because now we have an ideal number 4 जिसमें हम rely कर सकते हैं. And he was special today, sir, because he took that pressure of Virat Kohli. Definitely. And if you look at his first, the way he started in this tournament, the first 5 matches, he was not in his element. The way he was bagged, you know, averaging around 33. And if you look at the second half, the last 5 matches, the way he has been averaging nearly almost, if I'm not wrong, 70 plus or something like that. His strike rate, his average, everything. And that speaks volumes, you know. Today, the way Shreyas Iyer is performing, a lot of credit has to go to the likes of Rohit Sharma, the captain, and coach Rahul Dravid. Even when he was injured, they were willing to wait, you know. No, we will extend the deadline. We will extend the deadline for the team selection. For Rahul and Iyer to be fit for the Asia Cup. So just trying to accommodate these guys, to tell them, and you know, when team management tells you, because if you look at the number of players India identified for prior to the World Cup, they almost tried for the last 2 years 50 odd players, and they truncated it for 24 or something like that. And then Iyer and Rahul, these 2 players, there were always doubts. Oh, who will be the number 4, fitness and all that, all those things. But team management was clear. Rohit Sharma and Rahul Dravid were clear that these are the guys. And Rohit Sharma in his interview, he said that India में हवा बनती है 4 नंबर के लिए. उन्होंने बोला कि 2019 में प्रॉब्लम था, इस बार हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि श्रेयस अय्यर है. ये बहुत बड़ी बात होती है कि कप्तान का ये बात कहना. श्रेयस अय्यर या केएल राहुल, देखिए ये दोनों खिलाड़ी और अभी तो लेजेंड नहीं बने हैं. They are middle of their career. और वहां पर इनके लिए इस तरह की इनिंग्स खेलना, आई थिंक दिस, यस, कोहली तो कोहली है, उसके बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं है. सूर्य को बोलते हैं दिया दिखाने वाली बात है. बट आई थिंक दिस मैच शुड बी, द बैटिंग शुड बी रिमेंबर फॉर द वे रोहित स्टार्टेड. गिल ने उसको कंटिन्यू रखा. ऑब्वियसली विराट कोहली डूइंग द विराट कोहली स्टफ, बट इट वाज श्रेयस अय्यर, यू नो, द 67 बॉल 100, रिमार्केबल. संदीपन सर, हम जैसे रोहित की बात, हम श्रेयस की बात करते हैं, कोहली की बात करते हैं, बट आई रेड समवेयर, बट दिस इज समवॉट ट्रू, एंड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रोहित, लाइक जो मैंने आज किया है रोहित ने, आई थॉट दैट पुट द प्रेशर रियली बैक ऑन द न्यूजीलैंड बॉलर्स, बिकॉज लोगों का ये डाउट था कि क्या इंडिया यही अप्रोच यूज करेगी, रोहित ये अप्रोच यूज करेंगे नॉकआउट्स में, व्हिच ही वाज डूइंग इन द ग्रुप स्टेज एज वेल. But I thought he played really well, and उन्होंने जो वो एक momentum दिया, that was carried on really well by Virat and Shreyas Iyer. उसके बाद your take on Rohit is now, because हम कॉलम में देखते हैं 50s नहीं है, 60s नहीं है, 100 नहीं है, but वो crucial 40s जो almost एक 200 की strike rate पे वो खेल रहे हैं, that is something valuable, and I think a great knock by Rohit. Absolutely, आपने बहुत सही कहा. देखिए रोहित ने ये टूर्नामेंट, I think throughout this World Cup, Rohit's approach has been the counter attack, the new ball. क्योंकि न्यू बॉल में अगर आप ओपोनेंट्स को बैकफुट में डालते हो ऐसे कंडीशन में, तो फिर
स्पिनर्स इंडियन बैटर्स, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ ऐसे कंडीशन में दे कैन परफॉर्म एनीवेयर, आई मीन दे आर अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिनर्स। लेकिन अगर न्यू बॉल बॉलर्स को प्रेशर में डालते हो, ओपोनेंट के बेस्ट बॉलर को आप अटैक करते हो, तो पूरा टीम का मोरल डाउन होता है। और हर मैच में रोहित ने वही करने की कोशिश की। जो ओपोनेंट का बेस्ट बॉलर है, आज देखिए ट्रेंट बोल्ट को कैसे फर्स्ट ओवर से अटैक किया उन्होंने। दूसरे मैच में अगर आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखिए या ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ये आउट हो गए, लेकिन बाकी जितने भी मैचेस में रोहित को स्टार्ट मिला है, ही अटैक द बेस्ट प्लेयर, ओपोनेंट बेस्ट बॉलर। तो इससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। ओपोनेंट को आप जो इनिशियली जो है आपको बैकफुट में डाल देते हो। तो ये बहुत बहुत बड़ा रोहित शर्मा ने जो एज ए कप्तान, as Vimal ji was saying, he was leading from the front. Absolutely, he created the momentum and the others build on it. But जो momentum initially create करना है, हर मैच में रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया है। I personally feel, sir, कि this is a question to you all, कि I personally feel कि रोहित शर्मा ये इसलिए कर पा रहे हैं because he knows कि at number 3, 4 and 5 he has that cushion of Kohli, Iyer and KL Rahul. And Kohli ये इतना अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि he knows कि at the top उनके ऊपर प्रेशर हटाने के लिए रोहित शर्मा है। बिकॉज एट द स्टार्ट जब तक कोहली आते 7-7.5 का रन रेट होता है ऑलरेडी। सो इट्स अ टीम वर्क। इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। दुनिया के किसी भी चैंपियन टीम को अगर आप देखें, आप माराडोना का अर्जेंटीना देख लीजिए, आप पेले का ब्राजील देख लीजिए, आप 2010 का स्पेन का टीम देख लीजिए, तो ओवरऑल किसी भी चैंपियन टीम का देखें, एक प्लेयर या दो प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, दे कम्प्लीमेंट ईच अदर। और जो इंडियन टीम में दिख रहा है कि एवरीवन इज कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, everyone is cheering for each other's performance, everyone is building on each other's performance. So this is the biggest advantage or biggest plus point of this Indian team in this World Cup. जो आपने कहा कि रोहित शर्मा ये कर पा रहे क्योंकि उसे पता है कि कोहली नीचे है, कोहली ये कर पा रहे क्योंकि उसे पता है कि जब बॉलर्स आर ऑलरेडी इन द बैकफुट, क्योंकि ऊपर में उसको टीम को स्टार्ट मिल चुका है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि these players they are not even thinking कि नीचे कौन है कौन नहीं है, they are just trying to play as they have decided. They have no negative thought whatsoever, irrespective of the conditions, irrespective of the opposition bowling attack. They are just playing their own way of cricket, which is counter-attacking cricket. Absolutely. And a couple of questions before we wrap things up. पहला क्वेश्चन विमल सर यही है कि do you think the New Zealand bowlers look lethargic? Credit goes to Rohit Sharma and Virat Kohli and others, Shreyas Iyer. But do you think वो New Zealand attack, आज ये New Zealand attack नहीं लगा जो हमें टूर्नामेंट में दिखता है? Santner was off, Bolt, Saudi went for 100 runs by the way, 100 for 3. उनके विकेट कॉलम में 3 होंगे लेकिन वो 100 रन गए हैं। तो do you think they look lethargic and off color today, which is a good sign for India actually? I won't say, maybe lethargic is slightly a strong word, but what you felt that this is not the kind of commitment you see from New Zealand side. I think they were just the moment they lost the toss, I think something just died within them कि भाई अब खत्म हो गया कहानी। टॉस मतलब अब हम लोग ये 50 ओवर की गर्मी में करेंगे और इंडिया तो हमें मतलब पीटेगी। तो कोई भी बॉलर आया न्यूजीलैंड नहीं तो आउट ऑफ ब्लू, मतलब मैं देखता हूँ कि वो उनकी फील्ड प्लेसमेंट हो, मतलब आपको यकीन नहीं होता। ट्रेंट बोल्ट जो है रोहित शर्मा को पैड पे दे रहे हैं, ऑन साइड दे रहे हैं, वाइड कर रहे हैं साउदी, फिर अपना लॉकी फर्ग्यूसन भी आए तो उन्होंने भी इस तरह से बेवॉर्ड यू डोंट सी। मतलब अच्छा सेंटर को तो इन्होंने अटैक, रोहित ने तो पहले से डिसाइड किया था अटैक करेंगे। सो आई थिंक मतलब ये लग रहा था कि यार ये न्यूजीलैंड मतलब ये परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हो श्रीलंका से, बांग्लादेश से कि चलो एक बार आपने इनको शुरू में मार दिया तो इनकी हवा निकल जाती है, इनको समझ में नहीं आता। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का यू ऑलवेज सेंस कि दे विल कम बैक। ये वियर्ड फील्ड प्लेसमेंट होगी, कुछ वो गेम करेंगे कोई अलग। यहाँ पर तो मतलब रोहित शर्मा को इस विकेट पे वो बाउंसर मार जा रहे थे, शॉर्ट बॉल है वो बार वो गेंद को बाहर भेज रहे थे। सो आई थिंक मतलब पता नहीं समहाउ मतलब फ्लैट दिखी, बहुत फ्लैट। इतनी फ्लैट न्यूजीलैंड की टीम आपको दिखती नहीं है। Clueless. I think they look quite a bit of quite clueless. उनका प्लान ये जब फेल हो गया, उनका प्लान भी क्या था मुझे समझ में नहीं आया। Exactly. And one last question before we head back to the second innings कि ये दोनों के लिए सर, आप दोनों के लिए कि मतलब I'm sure it's like for me it's like still like 80-20, 80% India win probability, 20 because you can never count a team out at Wankhede. But आपको क्या लगता है कि
with respect to what's happened in the first innings and ड्यू भी आने वाला है सेकंड इनिंग्स में, बट डू यू थिंक कितने में इंडिया चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं, बट डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक? मेरा ये था क्वेश्चन, सॉरी, बट डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, या फिर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड में अभी भी वो एक फाइट बची हुई है? सी, अगर 400 बनाने के बाद न्यूजीलैंड हारी है मैच, भले ही वो कर्टेल्ड हो गया था मैच, लेकिन फैक्ट ये है कि 25 ओवर में पाकिस्तान ने 200 रन बना दिए थे, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ ग्लेन मैक्सवेल ने वो कॉन्फिडेंस दिया है, यहाँ पर ड्यू का भी फैक्टर है, यू नेवर नो। हालांकि अगर आपने तो 80-20 दिया, मैं तो 95-5 बोलूंगा, 95% इंडिया के हाथ में। वो इसलिए क्योंकि आपका बॉलिंग अटैक इतना तगड़ा है, मतलब ये बॉलिंग अटैक में तो आप 300 रन भी आपको डिफेंड दुनिया के किसी भी विकेट पे, मतलब इवन इफ अगर ड्यू भी फैक्टर है तो the fact that they have the further cushion of 98 runs, I think that is too much, क्योंकि World Cup semi-final, huge game, I don't see, to be very honest, they might fight, मतलब न्यूजीलैंड का एकमात्र चांस है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहें, चल गया तो चल गया, रविंद्रन, डैरेल मिचेल, किसी एक का बल्ला चल गया, 100 रन किसी ने बना दिए तेजी से, क्योंकि देखिए ऐसे मैच जीतने के लिए तो आपको एक बिग 100 चाहिए या डबल 100 चाहिए, और कोई उसके अराउंड, क्योंकि इंडिया की भी आप इनिंग देखो, रोहित ने बैटिंग की, गिल ने की, विराट ने, अय्यर ने, ऐसा नॉर्मली होता है, राहुल ने भी अच्छा सब बैटिंग करें। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन संदीपन सर, फाइट होगी या फिर ये एक वन साइडेड इजी विन होगा इंडिया का सेमीफाइनल? मुझे भी लग रहा है, विमल जी के साथ मैं भी एग्री करूंगा, मुश्किल है न्यूजीलैंड के लिए, मुश्किल है। दे आर ऑलरेडी ऐसी गर्मी में 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद, और वो भी डेवन कॉनवॉय का भी थोड़ा सा फिटनेस इशू लग रहा है, ही इज नॉट 100% फिट। डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट दे गेट, डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट। अगर वो 10 ओवर या 12 ओवर में 100 फॉर नो लॉस है, देन डेफिनेटली वी कैन think of a fight, but apart from that, अगर न्यू बॉल में इंडिया टेक द 2-3 विकेट्स, आई थिंक द मैच विल बी ओवर। बट क्रिकेट है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है, वानखेड़े छोटा ग्राउंड है, ड्यू भी आने वाला है, बहुत ह्यूमिड दिन रहा है आज, तो यू नेवर नो, देयर शुड नॉट, इंडिया 5 बॉलर के साथ ही जा रहा है, कोई 6 बॉलिंग ऑप्शन है नहीं इंडिया के पास, तो यू नेवर नो, बट लेट्स होप दैट के जल्दी मैच खत्म हो। लेट्स नॉट मेक इट मोर ड्रामेटिकल, ऑलरेडी एज ए जर्नलिस्ट वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। आज एक माइलस्टोन दिन है, अब मैच ज्यादा, अब मैच जल्दी खत्म हो जाए बस। एज ए जर्नलिस्ट मैं प्रे करूंगा, बट एज ए क्रिकेट फैन सभी चाहेंगे कि एज ए वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, थोड़ा बहुत फाइट देखने को मिले। So one last question, since you mentioned bowlers, whom do you think is going to be a star bowler from the Indian side? My question to both of you. मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी। I think Kuldeep Yadav. Yes, I think I'm going to go with Vimal sir on this one. ओके सर, तो ये लाइव सेशन हम यही एंड करते हैं, एंड होपफुली इंडिया, मेरे लिए तो इंडिया अभी भी दे हैव रीच्ड द फाइनल्स, ऑलमोस्ट 1.5 foot in the finals, you know, just like Akash Chopra tweeted, we win the toss and we're straight in the finals, so absolutely I think we're there. तो सर वानखेड़े, all road leads to अहमदाबाद। कल किसी दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, कहीं से भी अहमदाबाद का टिकट, आप फ्लाइट का टिकट मत खरीदिए, बहुत महंगा होने वाला है। अब खरीदना है तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि सब जा रहे हैं। ये बात आपने सही कही सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आप भी जाइए सर, एंजॉय करिए सेकंड इनिंग्स, एंड होपफुली दिस मैच गेट्स ओवर क्विकली। थैंक यू सो मच।